restaurants are very very difficult business to be in. एक artist लगना और बनना भी एक चीज़ होती है. American Garden shelves पे आपको अब नहीं मिलता. We have taken that shelf space के opportunities ढूंढो बहुत सारी हैं. If you're hustling, I'm hustling, we're all hustling. Elon Musk is hustling. Yeah. You know, I hear every day कि 7 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए. अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारे दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त है जो एक्चुअली इंटेलिजेंट है और सिर्फ जोकर नहीं है तुम्हारी तरह, तो मैं आई एम प्राउड टू से हर नेम बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. हम मिले थे एक प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग पर, वो उन्होंने मुझे नई प्रोजेक्ट दिया और हम फिर नहीं मिले. पर टर्न्स आउट हम एक एरिया में रहते थे तो हमारी फिर दोस्ती हो गई. एंड आई एम वेरी लकी टू नो यू. एंड शी इज़ समर सुल्तान एंड शी इज़ द Co-Chairperson of the board in Shan masala, Shan Foods I mean, and then she's the co-founder of Dipitt, which is not a plug. I use it. Half of people in my office use it. I only have 2 other people, but but it is an amazing sauce. And also Bringit. Yeah. So what happened with Bringit? Bringit used to be this amazing place जहाँ पे आप wings खा सकते थे, और boneless wings थी और वो bone वाली wings थी और sauces Lots of थे. stuff. Yeah. So basically COVID, I would say, was a pretty big catalyst for us to shut it down, because वो खोलना बंद करना, it costs money to set it up and to have your employees be constantly there. तो हमने 6-8 महीने चलाया. फिर we moved to a ghost kitchen model, where you outsource your kitchen to a delivery only. And I think वो boom था उस वक्त, बहुत सारे लोग इस काम में आए हुए थे, but it wasn't sustainable for a lot of people. So a lot of those ghost kitchens actually shut down. Oh really? Yeah. I thought it's low cost. It makes sense. It makes good sense. on paper. I think it works for some of the marketplaces. They've very successfully, I don't want to name the platform, but there are platforms who basically looked at our data. Yeah. कि क्या ज़्यादा बिक रहा है, और उन्होंने अपने पास वही चीज़ें खोल ली थी. So then we were on the same platforms competing with the platform itself essentially. Right. So and then there's percentages in terms of commission. मतलब जैसे Bringit है तो Bring It On है. Bring It On है. हाँ बिल्कुल. So a lot of people were like कि Bring It On कोई नया है. I was like नहीं, it's not us. And it's very messed up that some platform would do that, because you can't really, you know. I mean, they had we'd been on the platform since our inception, so they essentially knew कौन किस वक्त क्या मंगवाता है, क्या flavors चलते हैं. They knew the pattern of the customer. But honestly, like, restaurants are very very difficult business to be in. I think it's underestimated. No, I think that they're called one of the riskiest businesses. I think I was reading some article in Forbes. Survivability beyond the first year is a big, और लोग अक्सर शौक में करते हैं, उसको business की तरह नहीं चला रहे होते. And for me, another catalyst was time. Meaning that restaurants require time, and whilst we were still doing Bringit, we started Dipitt as well. तो उसमें scalability के perspective से और profitability, क्या वो इसलिए था कि हम wings के लिए sauce बना रहे हैं तो might as well sell the sauce too? Yeah, so essentially that a lot of our friends in the restaurant community then started coming to us and being like आप हमें भी दें. हम बाहर की imported use कर रहे हैं. Who was making the sauce? Who was coming up with the recipe? I was me and Shan were both doing R&D. But जो first 6-8 थे उसमें से, मतलब it took us a couple of years actually, because we had to crack everything from like where the chili is going to come from. Because a lot of people think, okay, these are the people who are the suits. They're not actually making. No. So I have a family history of family business that is very centered in food. So I definitely had the skills to do it. But which is Shan Foods. Yeah, but I obviously also came from a place of wanting independence from them. So help भी नहीं मांगनी थी और मांगनी भी थी, और how could I keep them at arm's length and still want to do something for myself? Was it also the pressure of like you going like, okay, he's done so much, and now that I have to
I have to top it or match it. I mean, he had very big shoes to fill. So मैं कभी भी उनको I can't ever compare myself. This is a 40-year-old company. So if I start thinking about what he's done, and I'll get paralyzed. So, can you briefly tell people about how Shan originated? Yeah. Briefly, so people know. So, like the origin story, where the idea came from was my dad essentially got into the kitchen when his mother went to Islamabad for a wedding, and that back in the day, you go to Islamabad, Lahore, you stay there for a few months, and then you come back, and they had these solid bricks of masala. और रस्सी पे बंदी भी होती थी, and everyone would break off a piece and use it. When that finished, my dadi had left some masalas for them. वो जब खत्म हो गए तो my father called and said कि भी अब क्या करें? तो she said खुद देखो क्या करें, बाजार से ले आओ. बाजार गए तो वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही थी, he was not satisfied, so he said I'll make it myself. So he started out. My mother was also, they were not married. रेसिपी उनकी थी. अबू अम्मी ने साथ किया था, शादी से पहले ही काम शुरू किया था, फिर शादी हो गई, then they launched the actual product. One of my aunts was in the US. उनकी शादी हुई थी, वो US चली गई थी, तो उनको भी थोड़ी बहुत आदत थी मसालों की, तो उन्होंने बोला अबू को कि भाई सिकंदर सेंड मी सम मसाला. सो हम लोग उस ज़माने में उसमें रहते थे अपार्टमेंट बिल्डिंग में, तो हमारी नेबर्स थी जो PI के एयर होस्टेसेस होती थी. सो उनसे दोस्ती भी थी अबू अम्मी की, तो दे सेड कि भाई तुम न्यूयॉर्क की फ्लाइट में जाओ, हमारे मसाले ले जाओ. It was not even branded or anything. थैलियों में जा रहे हो. So shady है ना? Yeah, this is like 1980, 83, 84 around that time. तो उस वक्त मतलब थोड़े क्वांटिटीज में वो वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स को देना शुरू हो गई. तो फिर वो फ़ोन करके बोले what you're sending is not enough ना, now you need to send more. वो एयर होस्टेसेस भी परेशान हो गई कि इससे ज़्यादा तो हम नहीं लेके जा सकते, क्या बैग भरा हुआ मसालों का ले जा रहे हैं. तो लेके गए काफ़ी दफ़ा. क्योंकि उस वक्त रेगुलेशन भी नहीं थी, उस वक्त तो probably it wasn't such a big deal, so we could do it, but we did realize very quickly कि डिमांड है. तो our export and local sales started almost simultaneously. Okay. यहाँ पे हम ब्रांड बना रहे थे और वहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे. ये कौन सा साल होगा? So the company started in 81. This would be 83, 84, around the time my older brother was born. मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस वक्त. काफ़ी फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया. हाँ, थोड़ा एक्सेलरेट किया. They were working out of my grandmother's house. ठीक है. So they had converted the garage into a grinding area. They had put up these like टिन की छत वाली जगह जहाँ लोग बैठ के पैकिंग करते थे. जो सर्वेंट क्वार्टर था वो एक्चुअली मेरे अब्बू का ऑफिस था. So it was very small. It was like 8 by 8. ऑफिस में सो रहा है. नहीं वो obviously they had made other arrangements, but it was a small 8 by 8 का कमरा होगा. एक डेस्क थी और कुर्सियाँ थी दो आगे, और बाहर जो कमरे के बाहर दो लोग बैठते थे जो फाइनेंस और एडमिन देखते थे. So they did everything themselves. दादी के घर से दादी के घर से. My mother was also still very involved in the business. उनका क्या रोल था? So वो मसाले वो बनाती थी, मसाले वो बनाती थी और अंकल भी मसाले ही बनाते. हाँ, so they would collaborate together. Like Shan and I are working. कौन था? मतलब वो who was the marketeer? My dad. My dad had a history. I mean, he was an advertiser. He was in advertising agencies. He ran his own ad agency for a while. He used to make films and he was a photographer. He was a creative person. क्या नाम था? कोई याद है आपको? SSG के नाम से थी. SSG agency थी. ये obviously 18 like early 80s, late 70s, early 80s. That's how my mom and dad met basically. Yeah. Okay. So, ठीक है. फिर आप आगे गए, फास्ट फॉरवर्ड हुए. Then the philosophy was always like, this is we want to grow. ठीक है. So whatever money he would make, he would put it back into the company. Meaning कि अब हम दादी के घर से भी तो निकलना था. Because obviously लोगों डिमांड बढ़ी है. डिमांड की भी नहीं, मतलब my aunts and uncles were like भाई मतलब यहाँ से रह रहे हैं, यहाँ पे मिर्चों की स्मेलें आ रही हैं. Most of my dad's family by then had migrated to the US, so he was the only one in the family जो पाकिस्तान में ही रहे, and he chose to build his life here. So then वो फैक्ट्री एक बनाई. फिर उसमें पहली फैक्ट्री वो है जहाँ पे आज मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. वो वेयरहाउस था, was not being utilized. But that first factory वो जहाँ बनी हुई थी वहाँ पे realize किया, वो same realization I had that I need to attract good talent. वो इधर नहीं आएंगे. इनके लिए अच्छा ऑफिस बनाना पड़ेगा. तो वो मेन फिर कोरंगी के सेक्टर 23 में एक और आगे जगह ली, वहाँ बनाई. फिर just slowly expanded the business, and then we came on the main Korangi road with a big purpose built factory.
So it was a slow journey, but very sustained. ठीक है. So मतलब being in such a family business, like it's one of the biggest, mashallah. And didn't you feel obligated कि मैं business ही पढूं? Why did you go into arts? So basically मैंने बाहर पढ़ने जाना था. ठीक है, और मैंने politics, philosophy और economics पढ़ना था. PPE. अच्छा. I got into some really nice colleges abroad. Politics, मतलब were you? I mean, I had interest in it. Okay. I felt like just I don't know. पता नहीं वो उस ज़माने में 17-18 साल में मैं क्या सोच रही थी, but I wanted to do that. पीछे जिए समर. No, not college. It was like a philosophical thought and all of that. Economics का बहुत मुझे शौक था कि मैं economics बनना है. But patriarchy, so I couldn't go. My parents didn't allow me. They said IBA चली जाओ, CBM चली जाओ. इधर ही रहो. So मैंने बोला भाई CBM, no offense to any CBM student, but I just said I don't want to go there. I was a very good student. I was getting into good colleges. मतलब I just felt like CBM कौन जाता है? नहीं जाते हैं लोग, मेरा भाई है CBM. नहीं, अच्छा. But I just an IBA, पता नहीं, something about it just didn't vibe. Okay. So I said okay. I was always interested in art, लेकिन मैंने A-level art किया नहीं था. सही. तो Indus मैंने कहा Indus में try करते हैं. I was a photographer since I was like 13. मुझे Illustrator, Photoshop आते थे. A-levels में आते थे. That's pretty cool. So I wasn't like, I was interested in design. I thought this is a good way that I can pivot. Yeah. तो मैं Indus गई. मैं communication design पढ़ने गई थी. फिर 1 साल जो वहाँ का foundation year course है वो किया. उसके बाद बोला I don't want to do this. I want some freedom. I want to be able to express myself and learn how to express myself. तो फिर I switched to fine art, which is very, very far away from anything that I had initially thought, economics and politics or philosophy. से दूर है. But it allowed me, it taught me design thinking. It taught me कि भाई, how to be in difficult situations, because Indus is anyways not easy, और fine art तो और भी मुश्किल है. और मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे जब भी मैं स्ट्रगल कर रही होती थी, शी वुड से थिंग्स लाइक तुम जाओ मसाला की फैक्ट्री चलाओ, तुम कंपनी चलाओ, बिजनेस करो, ये तुम्हारा तुमसे नहीं होगा. एंड it would really irritate me that she would say that, because I said no, I'm not that either. This is who I am, this is who I want to be, so I prove myself. तो वो प्रूव करने लड़ के somehow the other ended up with distinction. And 6 months before that, they were failing me. Wow. So it was really like challenge. It was a challenge, but I showed them also. मैं ये बताऊँ बेटा. I didn't want to get into arguments about कि भाई painting क्या होता है. My work was very installation based. It was abstract. So I wanted to push boundaries in whatever I was doing. Nice. So sometimes teachers understand, sometimes they don't. But thankfully, नहीं मुझे भी है. हम भी एक कोई स्कूल में गए थे. थे राहिल साहब थे, वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, और नया स्कूल खुला था. हम A-levels के लिए गए और उन्होंने मेरे ग्रेड्स देखे और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे एडमिशन चाहिए, और है ना तुम लोगों की शक्ल देखो. ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि मुझे याद रहेगी ये शक्ल, तुम इधर बारबेक्यू टुनाइट पे वेटर हो गए. Oh my God, और मैं आऊँगा खाना खाने और तुम यही स्मार्क लेके तुम मुझे देख रहे होगे. And I left and it was we won't name the school South Shore. I was like तुमने नाम तो ले लिया. But yeah, sometimes teachers don't really know what they're doing. Okay, ठीक है. So आप फिर मैंने शान ज्वाइन किया. I joined Shan after I graduated. मैं बीच में आर्ट एंड बिजनेस पढ़ने सदबीज गई थी. ठीक है. और क्योंकि इंडस में आपको आर्ट बनाना सिखाते हैं, लेकिन उससे पैसे कैसे बनने ना ये नहीं सिखाते. तो I said okay, I have these skills now. I want to be an artist. Let's go and get some figure out how to make money from it. So when I went to Sotheby's, वहाँ पता चला कि भाई ये तो नहीं होगा. क्या मतलब? Meaning that you either have, like, the artist never makes any money, the gallerist makes money, the collector makes money. और पता नहीं इतना दूर बुलाया और वो होता ये नहीं होता. अच्छा जब जाओ. So I really felt like, as a collector I could enjoy this, but as somebody, when you have to brand yourself as an artist, आपने जैसे तुम हो, you have to have a persona. You have to have that persona that you live it. Like आप जिस तरह से बात करो, जिस तरह से कपड़े पहन रहे हो, एक artist लगना और बनना भी एक चीज़ होती है.
So I said, man, I don't know if I can do that. Like, can I really like put myself out there? I don't think I'm a very, I'm not going to say introvert, but I'm shy, I would say. तो वो शाइनेस को ट्रांसलेट होता है कि मैं सोशल मीडिया पे इतना अपने आप को प्रमोट नहीं करती है. कैन आई बिकम दैट पर्सन? आई क्वेश्चन दैट एंड आई फेल्ट लाइक मे बी नो, आई डोंट लाइक द लाइमलाइट दैट मच. तो वो भी एक वो चैलेंज था. सो आई सेड ओके, लेट्स पुट दिस टू द साइड, कलेक्ट फॉर एन्जॉयमेंट, कलेक्ट फॉर वो, बट कांट मेक दिस माई प्रोफेशन. राइट. सो आई केम बैक एंड आई सेड ओके, लेट्स जॉइन द फैमिली बिजनेस. ये एक्सपेक्टेशन भी थी. मैं गई और आई सेड ओके, लेट्स सी वेयर आई कैन ऐड. कहाँ से स्टार्ट किया? सो आई सेट अप अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट. उससे पहले आर्ट डिपार्टमेंट था. वो बंदा पता नहीं 20 साल पुराना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था. ऐसे नो, एवरीथिंग हैज़ टू कम ऑन इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप. ग्लू से चिपका रहा है. ये सब ऐसा ही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की एक सेटअप किया कि वी नीड टू ब्रिंग इन द आइडिया ऑफ इन हाउस क्रिएटिव डिपार्टमेंट वाज नॉन एग्जिस्टेंट बैक देन. तो लेके बाहर से कराएं के बाद एजेंसी से काम कराओ. तो मैंने कहा भाई, एजेंसी आपको 2 दिन में आपको काम देती है, इलस्ट्रेटर पे बैठ के आप 2 मिनट में कर सकते हो. यू डोंट नीड टू सेंड इन. वो सीडीज पे जाता था उस जमाने में, कोई करेक्शन होनी है, चेंज होना है, वो एजेंसी गई सीडी, नई सीडी आई, रीराइटेबल होती थी. हां, वही रीराइटेबल. इट वुड बी अ हैसल टू सेंड एंड रिसीव. तो मैंने बोला भाई 2 लोगों को हायर करें, आप एक पैकेजिंग डिजाइन देखिए और एक आपकी बाकी जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो देखे, और एक आर्ट डायरेक्टर हो जो जाके जिसका काम ही हो एस्थेटिक देखना. हम नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ. पैकेजिंग चेंज करवाई. तो वो इनिशिएटिव्स लिए. ऑब्वियसली मार्केटिंग में पहले कदम लेना शुरू किए. आई हैड मेंटोर्स, आई हैड पीपल हु वर लीडिंग एंड दे टॉट मी अ लॉट. बट मुझे फिर चैलेंजेस भी आना शुरू हुए जहाँ पे मुझे लगा कि भाई क्रेडिबिलिटी नहीं है. मतलब मैं तो सेठ की बेटी हूँ और मैं आर्ट पढ़ के आई हूँ. और वो मुझे लोग बोलते भी थे ना कि मतलब यू हैव नो कॉन्सिक्वेंस, आप आके कुछ भी बोल दो. सो हाउ डू यू प्रूव योरसेल्फ? सो आई स्टार्टेड अ कंपनी विद अ फ्रेंड कॉल्ड लॉलीपॉप एंड लड्डू. ठीक है. दिस इज इन 2011 or 12. लॉलीपॉप एंड लड्डू. हाँ, वो उस वक्त Mark II कैमरा था, कैनन का, वो लिया हुआ था. माई फ्रेंड केम, ही सेड वी हैव दिस आइडिया. आई सेड साउंड्स ग्रेट. आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि बेसिकली उससे पहले पाकिस्तान में वही पुराने ज़माने की तरह से वो बड़े कैमरों से वीडियोस बनती थी, शादियों वाली. वो जो खाने की वीडियोस पे चल रहे हैं. सो पैमान है दिस आइडिया कि भाई हम इसको कैंडिडेट पे लेके जाते हैं. इंडिया में 1-2 लोग, ग्लोबली लोग कर रहे थे बट पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया था. तो ही सेड लेट्स जस्ट ट्राई दिस, लेट्स ट्राई आवर हैंड एट इट. And alhamdulillah, it was a success from the get-go. Oh, really? Yeah. So we were the people who revolutionized wedding photography and filmography in Pakistan. Wow. Yeah. Nice. And then what was the next venture? So for me, फिर मेरी शादी हो गई 2014 में, और ये काम ऐसा था कि भाई वो तो रात का काम है. And I got pregnant right away. So I was like, भाई अब बच्चे के साथ pregnant के how will I do this? So he's still managing it and still there strategically, but वो चला रहा है अब बिल्कुल. Okay. फिर शादी के बाद बच्चे हुए. एंड देन माय हस्बैंड वाज आल्सो इन द काइंड ऑफ, ही स्पेंट 15 years इन कॉर्पोरेट. राइट. और डिज़ायर भी था कि कुछ अपना करते हैं. तो ऐसे अच्छा क्या करें. तो 2 आइडियाज़ आए थे. एक आइडिया था कि हम एक बार्बर शॉप खोलते हैं, मेंस बार्बर शॉप, लाइक अ प्रीमियम. एंड उस वक्त यहाँ पे मे बी नबीला वाज द ओनली वन डूइंग दैट, एंड वी वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल आल्सो. ठीक है. सो उसके ऊपर रिसर्च की, काफ़ी जगहें देखी हैं. वो पीछे बैक ऑफ द ब्रेन ये भी था कि एक रेस्टोरेंट भी हो सकता है. सो वी वेंट एंड सॉ अ प्लेस इन बुखारी एंड इट वाज एब्सोल्युटली नॉट सूटेड टू दिस हाई एंड सैलून दैट वी वर लुकिंग एट, बट परफेक्ट फॉर अ स्मॉल रेस्टोरेंट लाइक अ विंग शॉप. सो वो आइडिया साइड पे किया. ये बोला जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं चाह रहे थे कि भाई करोड़ों को खर्च हो. तो हमने बोला कि एक अमाउंट सेट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं. और वो अमाउंट थी 20 लाख रुपए. सही. ये 20 लाख रुपए है, इसमें दुकान भी बनानी है, लोग भी है, एवरीथिंग. द इनिशियल सेटअप इज गोइंग टू बी दिस मच. एंड इत्तफाकन उसी ज़माने में आपका कराची ईद भी हो रहा था. सही. सो वी पार्टिसिपेटेड देयर. We got a great feedback, great success. I think we were the highest selling in that year. Nice. फिर हमने अपना रेस्टोरेंट ऑन किया वहाँ. It was a small boutique, very sort of niche. The mistake that I made or we made was वो जगह छोटी पड़ती थी. मतलब 4 टेबलें थी, लाइन लग जाती थी. लाइक शिट, बहुत छोटी जगह खोल ली, अब क्या करें, अब इसको बड़ा करते हैं. अच्छा, रमज़ान में पीपल वुड गेट इरिटेटेड कि भाई बैठने की जगह नहीं है, हम अपने 10 लोगों को लेके आए, एक टेबल में 10 लोगों में ही पूरा रेस्टोरेंट भर गया. बिल्कुल. तो कहाँ किस तरह. तो वी वुड सर्व पीपल आउटसाइड. एंड उस वक्त बाहर बैठने का, वो कोविड में आके थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हुआ है, लेकिन पहले आप किसी को बोलो कि बाहर बैठ के ताली करें, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू, बोर्ड बेचने चले जाऊं. हाँ. सो then we went to Seher and we went to about 4 or 5 times the space.
Then the problem became, how do you fill this space up now? रमज़ान में तो चल जाएगी, but बाकी साल आपने क्या करना है? तो उसमें भी हम आपसे मिले थे, वो हमने कॉमेडी नाइट शुरू की. We started a lot of like social things in the basement. We had a space. So कभी कॉमेडी नाइट कर रहे हैं, कभी कोई मूवी का लॉन्च हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हम स्पा डे कर रहे हैं, कभी फिल्म लगाई हुई है. So lots of things that were happening and kept it happening. But it was so difficult. मतलब जब आप फ्री हैं, आपके दोस्त काम कर रहे हैं दिन में, और जब वीकेंड है, जब आपके दोस्त आ रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, आपका तो पीक टाइम है. और ऐसा नहीं है, मतलब यू थिंक दैट इट्स ओनली अ नाइट थिंग, बट द प्रेप स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग. सो दैट होल डे गोज बाय. वो पूरे 24 घंटे का काम है. और फिर सोशल मीडिया, एक गंदा पोस्ट आ जाए, कोई मक्खी निकल आई, कोई बाल नहीं, मतलब पाकिस्तानी आदमी किचन में काम कर रहे हैं, बाल अगर निकल आया, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स ओके, बट आई एम सेइंग दैट एज अ पर्सन रनिंग अ रेस्टोरेंट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू. स्लीव भी पहनाई हुई है ऊपर तक, ग्लव भी पहना, कहीं ना कहीं से उनके कहीं बाल निकल. It would be a hassle. It would just be like, what do you do? मेरे याद है एक हमारे मोटिवेशन पे वेटर होता था, उसके यहाँ तक बाल होते थे. हाँ, वो हाई नेक पहनता था ना, उसके यहाँ से निकल रहे होते थे 4 बाल. तो वो बड़े हेरी होते हैं, like Natalia said, true. So ये था. तो social media is great for restaurants, but it can also cause a lot of problems. और उनको एड्रेस ही, मतलब लोग मुफ्त में रोज खाना मांगने आके खड़े होकर के, ऑर्डर सही नहीं था, दोबारा भेजें. And bloggers come in and be like free food. So I'm just saying that it's too much hassle. It's a lot and you're not getting, मतलब हो सकता return है इतना नहीं. और सबके benchmarks वही हैं कि भाई वो देखो वो कितना अच्छा रेस्टोरेंट चला रहा है, वो रेस्टोरेंट ना एक वीकेंड पे इतने कमा लेता है, 40 लाख रुपए कमा लेता है. So it's not going to be the case for every restaurant. And it depends on where you open, scale. अब हम अगर नाज़िमाबाद में जाके विंग्स बेच रहे हैं, हो सकता है वहाँ acceptability ना हो. मैं गना वहाँ थी, लेकिन I'm just giving examples of areas we tried to open, but there wasn't much of a demand. It's a very niche. So वो issues थे. फिर डिपिट की तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो गए. And alhamdulillah, we're exporting to over 15 countries. We've crossed all the milestones that we had kept for ourselves. I remember I went to Chicago. I did a video and I saw them there, and it's really proud as a Pakistani because आपको है ना एक शेल्फ दिखता है जिसमें सारे सॉसेस इंडियन या कोई और होते हैं, एंड आपको एक दिखता है जो पाकिस्तानी है. एंड इट इज़ अ सॉस दैट, बिकॉज हम थक गए थे टू बी ऑनेस्ट, ये वो जो मीठे चीनी वाले सॉस, ये गैप था ऑनेस्टली. आप हाइंस लें जो बहुत एक्सपेंसिव है, और या फिर आप वो चीनी लाल फूड कलर it is nothing. I mean, honestly, we would look at the shelf and we would say कि भाई why there's some very big companies and every house has a sauce. Like it's not like वो opportunity नहीं है आपके पास कि मतलब लोग खाते नहीं है, मतलब आप imported भी तो ले रहे हो. And the catalyst also was really import substitution. We really take this as a personal contribution to Pakistan. कि अगर हम एक चीज आके replace का American Garden shelves पे आपको अब नहीं मिलता. We have taken that shelf space and we have been able to do it because we're giving a good product. We're trying to make it even better than what they do. And अब हमारी sustainability के goals हैं कि भाई हम इसको किस तरह से, अभी अगर हमारी reliance है on imported ingredients, we want to also localize those. So it's a longer term game plan. You told me about you're working with local farmers and you're trying to localize some of the chilies, localize some of the processes that we have. कर सकते हैं. मुझे तो ऐसे लगता है honestly, लोग बोलते हैं कि opportunity नहीं है. मैं तो अपने business में ही देखती हूँ कि भाई आप मुझे लहसुन छील के दे दो पैकेट में डाल के, वो भी एक बिजनेस है. And I'm not the only person asking for that. There's many opportunities. People just have to find them. And when you had asked me कि भाई you want to talk about entrepreneurship, मैं सोचती रही कि भाई क्या what advice can I give someone? And I would honestly say कि opportunities ढूंढो, बहुत सारी हैं. And just try to like have a vision of what you can do and where you want to go. Or hustle. If you're hustling, I'm hustling, we're all hustling. Elon Musk is hustling. So, if you want to be a business person or an entrepreneur, you're not doing it for the praise, you're not doing it for the glory, you're doing it because you have a vision and you want to accomplish it. That Elon Musk thing reminds me of an aspect of you. Your hobby, लोगों की हॉबी होती है वो स्विमिंग करते हैं या वो बुक्स पढ़ते हैं या वो फिल्म नेटफ्लिक्स करते हैं. Your hobby is you do these extensive puzzles and 3D like वो घर बनाना है. मैं एक दिन समर के पास गया, समर ने कहा मुझे घर बनाना है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, और मैंने देखा और छोटा सा मॉडल था, एंड
वैसे पूरी उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और हर कमरे की अपनी लाइट है, अंदर छोटे सोफे बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा ये मुझे कोई पैसे दे तो मैं शायद मुश्किल से करूं, बट द पेशेंस टू sit through and do that and now but I can tell you there's a secret. So I have ADHD और हमारा एक होता है कि हम हाइपर फोकस करते हैं उन चीज़ों पे जिससे हमें डोपामीन मिल रहा है, जो एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में मुझे डोपामीन मिल रहा है ना, तो मैं 2-3 घंटे बैठ के कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। And if I have very important work also to finish, I'll be like this is what I'm enjoying right now. So sometimes when you're making like वो तो मैंने अली बाबा या दराज से कहीं से वो एक घर मंगवाया था चाइना से, but I enjoy Lego, I enjoy these things which allow me to focus on something and then turn the brain off. तो वो those are the kind of things that you see. And does that also include the trading you do? Trading was for making money. Okay, that's just purely. It was also. How did I start? Yeah. I started in competition with my brother. He's someone who's like he knows a lot more about finance. ठीक है. मैं इंडस में थी, मैं आर्ट पढ़ रही थी, तो गूगल का ना एक he would always be like मैं ये ले रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये वो, and I would say ये खरीद लो, थोड़ा based on my own research कि I think this company Chinese Baidu search engine ये ले लो. He's like no. So I said okay, I don't have any money, but I do want to learn. So Google had this like you could buy essentially like a trading platform, but not for real. Like it's fake था, मतलब वो practice करने के लिए। So मैं डालती थी कि भाई इतने $1,000 है मेरे पास, मैंने उसके इतने गूगल के शेयर ले लिए, इतने ले लिए, और वो फिर पोर्टफोलियो में मॉनिटर करती थी। अच्छा, जब वो रिटर्न 50-40%, 60%, I was like, man, this like if I had actually put money in it, I would have made this. So then मैंने थोड़ा शुरू किया कि पहले तो अकाउंट आप कैसे खोलो, बिकॉज मैं लोकल ट्रेड मैं फॉरेन ट्रेडिंग की बात करी, तो उसका भी बड़ा हासिल है कि भाई अकाउंट कैसे खोला जाए, पैसे कैसे बाहर भेजे जाएं, वो सब एक डॉलर अकाउंट खोलना होता है, वो वेरीफाइड, स्टेट बैंक हैज टू अलाउ यू टू सेंड मनी आउट, लॉट्स ऑफ दीज हैसल्स, वो सब पूरा करके देन स्टार्टेड ट्रेडिंग And you recommend it to people? Yes, but don't do it like gambling. Do it like investments. And in order to be informed about these things, आपको कौन सी चीजें पढ़नी जरूरी है? You need to be aware of current events. खबरें पढ़ें. ठीक है. और how do you identify कि ये कंपनी, चलो ठीक है, अब मुझे पता चल गया, let's say for example कि tech is booming, let's say, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी? So for me, the decision I make is always based on my own, like what companies do I like. मैं Google use करती हूँ. ठीक है. मुझे पता है आज 5 साल में तो replace नहीं होने वाला, कहीं नहीं जा रहा. तो I would not invest in faddish things. I invest in companies. Companies देखें जो आपको लगता है survive करेंगी, thrive करेंगी. फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो आज नहीं है, उसको मतलब माई विजन इज टेस्ला, मतलब टेस्ला है और भी कंपनीज हैं. व्हेन यू आर लुकिंग एट माई होराइजन इज एटलीस्ट 10 years. तो 10 साल तक मैं जो पैसे आज आप खाना खाते हो, सैंडविच खाते हो, 100,000 5,000 गो आउट विद योर फ्रेंड्स, इट्स मनी स्पेंट, राइट? वो खर्च हो गए. हो गया. तो जो मैं पैसे इन्वेस्ट करती हूँ मैं उनको उसी तरह ट्रीट करती हूँ जैसे वो खर्च हो गए. तो उतना उससे ज्यादा नहीं, दुख नहीं होता फिर जब, हाँ, कि अगर खत्म भी हो गया तो ये मैंने ऐसे सोचो कि मैंने अच्छा डिनर किया, मैंने दोस्तों को बुलाया, एंजॉय किया, ट्रेडिंग की, ऊपर नीचे हुआ, एक्साइटमेंट हुई, गया तो सो उससे ज्यादा ना डालो जितना आपकी हिम्मत ना हो लूज करने की. एंड दैट टॉलरेंस बिल्ड्स अप ओवर टाइम, मीनिंग यू माइट बी ओके विद स्पेंडिंग 25,000 टुडे. 5 years from now you'll be putting 20 lakhs perhaps, because you're confident in your skill कि अगर क्रैश हुआ. And I made a lot of money in the जो कोविड वाला क्रैश था. Really? पूरी दुनिया बेच रही थी. I was like, man, this is the best shopping so you bought it for cheap. 26th of March, I went on a shopping spree. This was like the whole world is closed. These companies are not going anywhere. They will survive. We will get out of this, if not in a year, not 2 years. इससे सस्ते में मुझे कुछ नहीं मिलेगा. Go for it. अभी भी market low है if people want to get into it. Nice. Being a mother and a wife and then also doing all these things simultaneously, how do you manage? Because sons, it's life. It's a part. I mean, it's not. I struggle with time.
I have an infrastructure, I have a nanny, I have, kids are very occupied in extracurriculars, they have their routine set. Thankfully, I have a flexibility with my work where I can plan a little bit with flexibility कि मुझे अगर मीटिंग सेट करनी है, मुझे सुबह बच्चों को ड्रॉप करना है या लेना है या जो भी, then I can set it later in the day. It's not easy. But do you have time for me time होता है? Yeah, for sure. So after the kids go to bed, which is about 8:39, उसके बाद फिर मेरा enjoyment का time है. That's when I socialize. That's when I meet my friends. That's when I unwind. Movie देखने जाना है कोई दोस्तों के साथ, whatever. All of that happens post 9 o'clock. Yeah. I am not an early sleeper. That I'm trying to change. I think बीच में मैं summers में I went on a trek and I was sleeping at 10 and waking up at 5. And I know that if I implement this in my life will change. मतलब I will be optimizing everything. जो लोग नहीं वो बोलते success is sleep early, wake up early. वो अगर लोग कर लें ना वाकई में जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री मतलब फ्यूचर बदल सकता है. If you all sleep early and wake up early and get our day done. Yeah, but especially Karachi. Yeah. And I feel other cities I don't know, but I live in Karachi, so I know कि बहुत लेट काम स्टार्ट होता है. हाँ 10-11 बजे से पहले तो मार्केट नहीं खुलती. बिल्कुल. And in Nepal, for example, their culture is such that if, for example, सुबह आप 6 बजे या 5 बजे कहीं जाएं, बोनी is a concept, बोनी है बोनी, which is कि भाई अगर आपकी दुकान है और मुझे उनका एक वो है कि भाई जो भी पहला गायक आता है उसको वो मना नहीं कर सकते. ठीक है. जो भी दाम में वो जो चीज़ मांगे आप वो देते हो for like the luck or whatever, किस luck will shine on you. So the culture is कि the first thing you wake up and you go to market because if you're the first person you can buy everything cheap. So हमारा उल्टा हिसाब है 12 बजे दुकान खोलते. It's also not good for the environment. Yeah. Because our lights are open late till night. सुबह 6 बजे खोलने बिजली की ज़रूरत ही नहीं है आपको पूरे दिन. True. So what's in store next? What are you thinking? My backward integration plans are they're the source of the dopamine right now. Okay. I really feel like यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ हुआ. Maybe in Punjab there are people working, but in Sindh honestly not much. So I really want us to be able to get to a place where we're like 20 years behind India in terms of our farming practices. So I would like to be able to add value there. ताकि फार्मिंग इवॉल्व हो, मोर एफिशिएंट हो और किसान या जोहारी या जो भी वो भी कमाए और आपके पास भी लोकली सोर्स्ड क्वालिटी प्रोडक्ट आए जो आपके क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से बिल्कुल. इसमें मैं बोलूँगी कि इसमें शान भी है और डिपिट भी है बिकॉज शान के कुछ चिलीज हम लोकली प्रोक्योर करते हैं. वो चिली अपना इंडेंजर्ड में आ गई है बिकॉज हाइब्रिड्स इतने आ गए, इंटरनेशनल वेरिएंट मतलब चाइनीज चिली आ गई, फला चिली आ गई. बिल्कुल. वो कोई डिमार्केशन तो नहीं है. हमारी वाली का क्या नाम है? 2 नाम, वो एक ही नाम है. इट्स बेसिकली डंडी कट या गोला, क्वेटा गोला या गोल मिर्च कहते हैं. डंडी या गोल? डंडी कट. डंडी कट या गोल कट? लॉन्गी भी कहते हैं. मतलब इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया. सो इट्स वो तड़के वाली जो गोल मिर्च समझ गया. और एक डंडी वाली जो बस में डंडी, आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट डंडी कट बट इट्स अ स्मॉल राउंड वन दैट यू पुट इन योर तड़का. Okay. So it is an indigenous chili. You don't find it anywhere in the world. ये सिर्फ पाकिस्तान में. Only in Pakistan and only in specific areas in Pakistan. आपको पंजाब में नहीं मिलेगी. अब थोड़े लोगों ने लगाना शुरू किया. But the point is that it's something that is sort of fundamental to the flavor profile for us as a company, and we want to make sure that it survives. And how do we make sure it survives is by investing in research, investing in sort of working with farmers and teaching them कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से. अब पानी फ्लडिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. मैं ये चिली कहीं और से तो नहीं मैं प्रोक्योर मतलब कि मैं चाइना से मंगवा लूँ अगर यहाँ से नहीं मिल रही है, यहीं है. तो we want to make sure that we are prepared for the next 20 years. And we can't do that if we don't start today. True. और वो उसमें हम पूरा बलूचिस्तान पड़ा हुआ है आपके पास. मतलब वी नीड टू रियली स्टार्ट पुटिंग आवर हेड्स डाउन एंड बीइंग लाइक फूड सिक्योरिटी इज एन इशू. पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे फूड सिक्योरिटी का बड़ा आगे मसला आने वाला है और क्लाइमेट चेंज तो हमारे सामने है. तो हम हर साल ये बोलते हैं कि भाई what have you done to make sure those things don't happen again without turning a nation into beggars. मतलब इस साल फ्लड आया, पैसे दे दो भाई आप अपने लिए क्या कर रहे हो. और there are examples within Sindh where people of the villages that were flooded, उनको नजर आ रहा है रेला आ रहा है और उन्होंने जाके तैयारी शुरू कर दी. I'll send you a video that I have. It's fantastic. I got like goosebumps. They all went, women, children, men, and they built these like small dams
मट्टी के बोरियां, ये वो ट्रैक्टर जो भी था पूरा गांव लग के उन्होंने बना दिया, उनका गांव बच गया, वहाँ पानी नहीं आया. And they said, we see it on the news, we're seeing the water coming, and if we're not doing anything, then it's on us. They're not asking for aid. They're not suffering. So we want to make sure that we want to make people khud mukhtar. We want people to be क्या अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही वो, तो आप अपनी हेल्प करो. हाँ, क्योंकि अगर वो इनकॉम्पिटेंसी है बिल्कुल, बट वो अलग एक पर प्रॉब्लम है ना, वो सोल्यूशन नहीं है. We all want someone to come and we all want someone to come in and do it for us, but we're not going to do it ourselves. So I think I hear every day कि 7 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए. ठीक है, मैं privileged हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि maybe my life is not like their life, but I've seen people improve their lives. Living in Pakistan, हर बंदा तो कनाडा नहीं जा सकता. और अगेन मैं हमेशा अपनी एग्जांपल फैमिली की देती हूँ कि सब चले गए और मेरे अब्बू रुक गए. तो अल्लाह मैंने किसकी ज़िंदगी बेहतर रखी. अल्लाह मियाँ हैज़ गिवन माई फादर सो मच just for this one decision, because you see, we as a company, we're in the top 100 exporters. जो हम डॉलर की बात करते हैं, ये डॉलर तो हमने 81-83 में शुरू कर दिए थे लाना. सो हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम कहीं जाएं, हम कहीं नहीं माइग्रेट करेंगे, हम इसी मुल्क पे रहेंगे. और हम जब मैं सुनती हूँ ना लोगों से कि भाई छोड़ के भाई हर बंदा नहीं जा सकता. I want to take care of the people who will stay back. So I don't have any aims to go anywhere, and I'm here for the long run. So आती रहे पॉलिटिक्स, PTI, MQM, जो भी है, मैंने तो उनके साथ ही काम करना है जो यहाँ पे मेरे साथ लग के मुल्क को बेहतर करने की बात करता है. Whether it's you, whether it's somebody who's doing manufacturing, with anyone. We are not interested in people who have no stake here. Yeah. This company is our companies are based here, our assets are based here, our lives are based here. So we want to make sure that whatever little that we can do, even if it's a container of masala or a container of sauces, it's bringing in dollars for Pakistan. It doesn't take much to move us and our manufacturing to anywhere, some other country. But why do we choose to stay here? Because this country has given us everything. So this is our little contribution to Pakistan. Yeah. On that note, I think we'll call it. Thank you so much. Thank you, Samad. That was a really interesting conversation, and I'm glad you shared it with us, because I think some of these things you don't talk about, and yours is a very candid, like you're a friend talking to me. It's not TV. It feels casual. That's how it should be. Yeah, people should know the real talk. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye.